Hello and welcome to Administration Wise. So it's a very long time, but instead a very good time to start and continue with our Administrative Thinker series. And next in this row is about the Mary Parker Follett, who is known for his ideas on dynamic administration. She occupies very prominent place among the administrative thinkers and she initiated her studies in इंडस्ट्रियल ग्रुप. ट्रेडिशनली द सोशल एंड द पॉलिटिकल थिंकर्स जो थे वो सोसाइटी और स्टेट तक के ही चीज़ों पे अपने आइडियाज दिया करते थे, बट शी केम अप विद द इंडस्ट्रियल ग्रुप्स एंड शी इवॉल्व्ड हर प्रिंसिपल्स of the human association and organization in the context of the industry. कुछ उनके प्रोमिनेंट वर्क्स जो उन्होंने किताबें लिखी, दीज आर द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. दिस केम अप इन 1909. नेक्स्ट बुक इज द न्यू स्टेट. This came in the year of 1920. Next one is creative experiences. And this came in the year 1924. And one more book which is very much important is Dynamic Administration, which was released in the year 1941. And this book, Dynamic Administration, was posthumously edited by Metcalfe and Urwick. ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है. By Metcalfe and Urwick, जो इनके मृत्यु के बाद एडिट किया गया था. Her contribution were admirably a combination of the intellectual power, the personal observation, and the broad human sympathy also. And contemporary administrative thinker once called her as a one-man research team. She was a very keen observer of the business organizations and their administrative processes also, and from these observations she developed her own insight and in understanding into the way that may be called the dynamics of the interpersonal psychological processes of the administration field. Now, her idea on the resolution of conflict or the constructive resolution. इनके अनुसार जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें कुछ कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहने चाहिए ताकि कुछ सोशली वैल्यूएबल जो डिफरेंसेस है वो निकल करके सामने आ सके. सोशली वैल्यूएबल डिफरेंसेस. And according to her, the constructive conflicts are the natural process, are natural to come. And she was of the opinion that
conflict should not be seen as biases. ये bias नहीं है. It is neither good or nor bad, and it is just the appearance of the difference which should be capitalized upon, and as all the policing is done by friction, जितने भी पॉलिशिंग होते हैं हमारे पास वो फ्रिक्शन के कारण ही होते हैं. फ्रिक्शन के बाद ही चमक बाहर आएगी. तो इनके अनुसार कन्फ्लिक्ट होते रहने चाहिए. और सिमिलरली conflicts could also be constructive and could enrich the organization in its process and production. She talks about three ways of dealing with the conflict. What are these three ways? These are domination, next one is compromise, and integration. As the name suggests, the domination means the victory of the one side over the other, and this seems to be the easiest way to resolve the conflict, and it is not the successful way in the long run. लंबे समय के लिए ये सक्सेसफुल नहीं है. The repressed wishes of the dominated always rebel against the dominator, and whenever it is possible. Next one is compromise, in which the people settle most of their conflicts through the compromise only, and each party to the conflict, and this gives up the little in the method to resolve the conflict, and this quite wide accepted way of the resolving conflicts, and still the people are reluctant to go for it to be as it involves losing of the something. Hence it is not also so much preferable. Not preferable according to Mary Parker Follett. Next one is integration, and according to Follett, this is the best way to resolve a conflict, in which the two party desires to get integrated, and there is no need to sacrifice among any of them, and the Follett favors this method of resolving the conflict in comparison to that of these two, domination and compromise, in which any of the two party will not lose. Hence this is the best way to resolve the conflict according to our thinker Mary Parker Follett. Now moving to the next slide, that is about the processes and the steps involved in the process of integration. The very first step is to bring the differences into the open instead of suppressing them. पहले तो differences को सामने लेकर के आना है, and not to suppress. And the immediate necessity is to resolve the conflict by understanding and identifying the nature of the conflict. Hence, to bring out the differences को पहचानिए और सामने लेकर के आइए. The next step in this row is to divide the whole conflict into the smaller constituent part. This is similar to the way of reverse engineering, we can say. And next one is to anticipate the conflict. Anticipation means knowing which way the conflict would head once the proposals are prepared and presented to the parties, and it is just like a game of chess where all the moves are pre-calculated. It is just like a game of chess. Though the Follett proposes
integration as a way to resolve conflicts permanently still is alive to the problem in the whole process, and lack of the inventiveness, we can say the habit of enjoying the domination and use of the proper language are some of the problem, and hence she emphasizes on the proper training to resolve these issues, and in order to get to the use of the process of integration, we can say. And according to her, the courses of the art of cooperative thinking should must be there, both the managers as well as the workers, or to the master the art of integration, so that they can master the art of integration. Why? So that they can resolve conflicts. Now the next one, the law of situation. Situationship नहीं, the law of situation. क्या है ये? Here comes the term bossism. बॉस पना झाड़ते हैं जो लोग. And Fayol was too much concerned with this bossism, in which the superior shows off his or her superiority, and in order to avoid it, she has suggested the depersonalizing order. इसके लिए क्या सजेस्ट किया था? Depersonalizing order. And this is where the law of situation comes up, in which the order should not be given by one person to the other, rather both the order giver and the order taker should take the order from the situation. क्या कहते हैं कि कोई भी बॉस किसी भी सबऑर्डिनेट को ऑर्डर नहीं देगा, rather the order should be taken up by the situation of the environment, situation of the time, and this will flow toward both the boss and the subordinate also. And this law gives the importance to the authority of the situation rather than that of the authority of the individual. And further, the Follett insists that the order should be integral to the situation, means all the way जो superior है वो situation है, condition कैसा है उस समय का, उस पर डिपेंड करेगा कि order कैसे flow करेंगे, and this should flow and this should be preferred toward both the boss and the subordinates, toward the superiors and toward the juniors also. Further, the Follett also insists that the order should be integral to the situation, and they should keep the pace with the situation and should not be static, and this will be the possible only when the orders are taken from the situation and not the any external force. Hence कोई भी external person, place, material नहीं होगा जो कि ऑर्डर दे रहा होगा, and the only superiority is given to the situation by our thinker Mary Parker Follett, who is said to be much forward from that of her time, जो अपने समय से काफी आगे के सिचुएशंस को हैंडल कर रही थी, जो उस समय अभी बाकी के थिंकर जो कंटेम्प्रेरी थिंकर थे उनके अनुसार अभी नहीं सोचा जा रहा था. Now the next one is the concept of power with rather than that of the power over. हम लोगों को पावर्स को शेयर करना है एक दूसरे के साथ, ऐसा कहती थी मैरी पार्कर फोलेट, rather than कि किसी के ऊपर पावर का डोमिनेशन नहीं दिखलाना है. So according to Follett, the term power as the ability to making the things happen, to be the causal agent and to initiate a change. She distinguished the power over with the power with. Power over is superior than that of the power with.
The former represents the coercive force, while the latter is the cooperative. Power with is cooperative, and this one, the power over, is a kind of coercive force. Hence, power with is better as the people wish to see the working with the someone rather than that of under someone. ऐसा कहा जाता है कि लोग एक दूसरे के साथ काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, ना कि एक दूसरे के किसी के अंडर काम करना पसंद करते हैं. So according to Follett, it is not possible for the people to get rid of the power over concept, and this can be accomplished by the law of situation, the functional unity, and लॉ ऑफ सिचुएशन अभी पढ़ा हम लोगों ने, फंक्शनल यूनिटी एंड द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑल्सो. Hence, the functional unity means that the within its own sphere of the function, everyone has authority and responsibility. सबके पास functional unity क्या कहता है कि सबके पास जितने भी लोग हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, ए बी सी डी ई, सारे लोगों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सारे लोगों के पास ऑथोरिटी भी है. कोई भी एक सुपेरियर नहीं होगा, कोई भी एक उसका जूनियर या फिर सबऑर्डिनेट नहीं होगा. ऑल वर्क विथ पावर with rather than power over. पावर ओवर नहीं, पावर with. जबकि जो हायरार्किकल प्रोसेस और जो ऑर्थोडॉक्सी चलते आ रहा है उस हिसाब से तो पावर ओवर को रिप्लेस कर पाना मुश्किल है, फिर भी ये वाला सिचुएशन ज्यादा सही है. द लॉ ऑफ सिचुएशन, द फंक्शनल यूनिटी एंड द इंटीग्रेशनल प्रोसेस. नेक्स्ट वन इज फंक्शनल यूनिटी. इसके बारे में अभी हम लोगों ने थोड़ा सा बात किया था. ऑथोरिटी ऑफ द फंक्शन. इट मीन्स फंक्शनल यूनिटी क्या कहता है कि जितने भी काम अलॉट किए जाएंगे फॉर ऑल द अलॉटेड फंक्शंस, देयर शुड बी ऑथोरिटी टू ऑल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑल. जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में, सबके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सबके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथोरिटी दोनों सबके पास है. कोई भी एक सुपीरियर नहीं होना चाहिए, सब आपस में मिलकर के काम करेंगे. दिस इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिटी. फॉले के अनुसार ये कहा जाता था कि जो अथॉरिटी है वो फंक्शनल होनी चाहिए, और फंक्शनल अथॉरिटी मस्ट कैरी विथ इट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड अथॉरिटी डिराइव्ड फ्रॉम द फंक्शन, एंड दस द लिटिल टू डू विद द हायरार्की ऑफ द पोजीशन. मीन्स हायरार्किकल प्रोसेस को ये कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर रही हैं, और इनके अनुसार फंक्शनल यूनिटी होना चाहिए जो भी ग्रुप है या ऑर्गेनाइजेशन है उस जगह पे. And the authority must rest with the function and not with the individual or the position of the holding. Next concept here is the concept of leadership. फॉले के अनुसार जो लीडरशिप का कंसेप्ट है ये सिग्निफिकेंट चेंजेस से गुजरा है फ्रॉम द टाइम चेंजिंग ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ द सर्कमस्टांसेस एंड द कंसेप्ट्स ऑफ द ह्यूमन रिलेशंस दैट केम अप. ह्यूमन रिलेशन के कंसेप्ट्स और जो सर्कमस्टांसेस जो चेंज होते जा रहे हैं दिन ब दिन, उसके कारण लीडरशिप का जो डेफिनेशन है वो हमेशा चेंज होता रहा है. एंड लीडरशिप डज नॉट कम from the official status of the position but it is the attribute. इनके अनुसार क्या है, ये किसी भी ऑफिशियल पोजीशन, किसी एक पोजीशन पे आने से के कारण किसी में लीडरशिप नहीं आ जाता है, बट ये एक तरीके का एट्रीब्यूट है जो कि उस पर्सन के अंदर खुद से होता है, जो
एक encouraging इनिशिएटिव ले रहा हो या फिर energize करता है अपने ग्रुप को किसी तरीके से. And according to the Follett, such people are not just found at the positions of the power but through the और द ऑर्गेनाइजेशन. इनके अनुसार किसी पोजीशन पे आने पे ही वो लीडर बनेंगे ऐसा नहीं है. ये ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पोजीशन पे रह सकते हैं और उनके अंदर लीडरशिप का जो कैरेक्टर्स है, जैसे कि वो एनर्जाइज कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं, किसी नए इनिशिएटिव को ले सकते हैं, ऐसे ऐसे लोग पाए जा सकते हैं. इन्होंने 3 तरह से लीडरशिप को कैटेगराइज किया है. पहला जिसमें कि है लीडरशिप ऑफ पोजीशन, लीडरशिप ऑफ पोजीशन. Second one is leadership of personality, and third one is leadership of function. वो लोग एक्सपर्ट नॉलेज के साथ आएंगे, स्किल्स होंगी उनमें, और नॉट द वंस हु हैव फॉर्मली ऑथोरिटी एंड पर्सनैलिटी एक्चुअली दैट लीड, and this is due to the fact that they take the leadership due to the situation, and it is the reason that they can give order even to those who are higher than that of their rank. ये अपने superiors को भी order दे सकते हैं अगर इनके पास better ideas हैं तो. और इनके अनुसार जो 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन होने चाहिए लीडरशिप के लीडर्स के पास, वो क्या क्या है. द फर्स्ट वन इज ऑफ कोऑर्डिनेशन, सेकंड वन इज द डेफिनेशन ऑफ पर्पस, and the third one is anticipation. Now, अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस, ये भी एक कंसेप्ट है जिसको कि नेबरहुड वॉलेंटरी ग्रुप भी कहते हैं. ये काफी ज्यादा पसंद किया करती थी कम्युनिटी सर्विसेज को, और खुद भी बहुत ज्यादा एंगेज हुआ करती थी इन कम्युनिटी सर्विसेज में. सी वाज एन एक्टिविस्ट इन द कम्युनिटी सर्विसेज एंड इन 1918 शी मेंशन्ड इन हर बुक द न्यू स्टेट ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन एंड द सॉल्यूशन ऑफ द पॉपुलर गवर्नमेंट. एक नया और बुक मिल रहा है, क्या है ये, 1918 में आया था, द न्यू स्टेट ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन द सॉल्यूशन ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट, द सॉल्यूशन ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट. In which she mentioned that instead of the present system of alternative system that governance is followed, there needs a system that to be evolved in which the network of neighborhood voluntary groups should work, and neighborhood the uh, people in their surroundings should work as the administrator or the governance system and should be established in order to replace the administrative structure. And she was affirm in her belief that about the efficiency of and efficacy of the group in the human function. और इससे इनका मानना था कि रिजल्ट जो है वो ज्यादा बेटर आएंगे, और दिस टाइप ऑफ वर्क इज कॉल्ड एज द चैंपियन ऑफ प्लूरलिज्म.
इस तरह के आइडियाज के कारण मैरी पार्कर फोले को इस बुक के बाद एक नया आइडेंटिटी सामने इनका आता है, दैट इज चैंपियन ऑफ प्लूरलिज्म। नेक्स्ट वन इज क्रिटिकल इवोल्यूशन। क्रिटिकल इवेल्युएशन अगर किया जाए मैरी पार्कर फोले का, तो there is no doubt that she gave everlasting contribution to the field of administrative theory, first through the primary focus on the study of the private enterprises, but she did not make the distinction between the private and public organization। इन दोनों के बीच में ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाई कि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए और प्राइवेट में क्या होना चाहिए। इन्होंने एक जनरलाइज्ड टाइप ऑफ थ्योरी दे रखा है और हर prescriptions are useful for both the types of organization। The second type of criticism is that she did not opt for either or type of solution, rather than she preferred a balanced or both and type of solution। means इन्होंने किसी भी एक तरफ का पक्ष नहीं लिया, बल्कि इन्होंने बैलेंस करने का कोशिश किया कि दोनों तरफ को ये बैलेंस करके ही चल रही दोनों व्यू को। थर्ड type of criticism is that she laid the foundation of the for understanding the group dynamics and the authority and cooperation। She advocated wider participation of the individuals in the organization, for which Taylor and many other thought management as the series of the separate function, where one function may be the most important than that of the others, but the Foley emphasized mainly on the studying the functioning of the individuals as a whole in the organization, departing from the earlier line of the thinking। hence इनके अनुसार इंडिविजुअल्स और जो भी वर्कर्स हैं उनके कंडीशन को सुधारना ज़्यादा सही और ज़रूरी है। फोर्थ वन इज अबाउट द इंसाइट इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ह्यूमन रिलेशन। ये ह्यूमन रिलेशन की बात करती है, जबकि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आने में अभी काफ़ी वक्त था। और fifth one is for the normative and the psychological approach। She talked about the psychology and the normatism in the organization। and the next one is for the plurality of the functional authority। functional authority की बात करी थी इन्होंने ना, और the center in place of that of central authority। means authority जो है वो central ना होकर के ये डिस्पर्सल होनी चाहिए, फंक्शनल होनी चाहिए। जो भी फंक्शन कर रहे हैं उन लोग सबके पास अथॉरिटी होनी चाहिए और सबके पास उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। Hence, that's all about Mary Parker Follett, though his idea of integration is termed to be illusory, but they are a very good look in the era when she came up with them, and in the further period of the time in the field of administration, it helped a lot to the public administrative thinkers. With this, we came up with an end of the video. Thank you.